Hi and welcome to my dear students and assalamu alaikum to all of you. These days we are discussing the process of respiration and till now we have discussed the different organs which are involved in the process of the respiration. तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो मैकेनिज्म ऑपरेट होता है और द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन with the involvement of the lungs, with the involvement of the intercostal muscles, diaphragm and other respective structures. So by now we will be discussing the mechanism of the process of the respiration. Respiration में जो पहला step है, that is the process of the breathing. In that process of breathing, we have to make ourselves understand well that how inspiration and how expiration is taking place, isn't it? So let me take the first step, that is the process of inspiration. ठीक है? It will include the inflow of the fresh air and it will include the outflow of the foul air. And now let us take the first step, that is this very inspiration. Inspiration is that process which involves the inflow of fresh air, not oxygen. जब आप ब्रीदिंग करते हो, जब आप इंस्पायरेशन करते हो, आप अपनी सांस को लेते हो, when you are taking your breath, it means you are taking the air, not only oxygen. तो उस इनफ्लो ऑफ एयर को हम कहते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन. तो जो प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन होता है, इस प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज डायफ्राम. फर्स्ट स्ट्रक्चर that is diaphragm. See some changes which are taking place in the diaphragm during the process of inspiration. Diaphragm के अंदर जो muscles होते हैं which are called as diaphragm muscles, वो contract करते हैं, उनके अंदर contraction होता है और उनकी contraction की वजह से ये जो diaphragm होता है it gets inclined towards the lower side. When the contraction of the diaphragm muscles takes place, it leads to flattening of the diaphragm. अगर diaphragm ऐसा है तो इसके साथ जो associated muscles होते हैं which are called the diaphragm muscles, when they get contracted, their contraction will lead to flattening of the whole diaphragm. In other words, we can say that the diaphragm gets lowered as soon as its respective muscles get contracted. तो पहले स्टेप में जो diaphragm के अंदर जो muscles होते हैं they get contracted. The diaphragm muscles contract and their contraction will lead to lowering of diaphragm. When lowering of diaphragm will take place, it will lead to lowering or flattening of the diaphragm. It will lead to increase in the thoracic volume. Increase in thoracic volume. जो आपकी thoracic cavity है, उस cavity के अंदर जो overall volume है वो increase हो जाएगा. When volume increases, the increase in the volume will automatically lead to decrease in the pressure of your thoracic cavity. So when diaphragm muscles get contracted, their contraction leads to what? They lead to lowering of the diaphragm or flattening of the diaphragm. That will lead to increase in the thoracic cavity. तो जो thoracic cavity है, उस thoracic cavity के अंदर volume जो होगा वो increase होगा. You see, have a look over me. Once I am going to conduct my process of inspiration, my chest goes out. My thoracic cavity is increased by its volume. Once the volume is increased, it will lead to decrease in the pressure. This is the first thing which has happened to conduct the process of inspiration. The second thing will be conducted by the external intercostal muscles. External intercostal muscles. You know, from our front side we have frontal side, we have our sternum which is associated with the ribs, and the ribs are associated from our dorsal side with our vertebral column. And the muscles which are present just in between the ribs, they are called the intercostals. Here there are two types. One is the muscles which are present in between the ribs but just towards the outside.
they are called as external intercostals. And from the inner side, when we are watching the muscles which are present in between the ribs, they will be called as internal intercostals. But here in the process of inspiration, the role is being played by external intercostals. What are they? External intercostals are those intercostal muscles which are present just towards the outside in between the ribs. And what they will do? They will contract and will lead to pulling of the ribs. First of all, they will contract. Once they will contract, they will pull the ribs in such a direction so that sternum will be lifted up and out. They will pull the ribs. Their contraction will lead to pulling of the ribs. When the intercostals, which are just present outside, you can see here, the intercostals are present just in between the ribs. When they will contract, their contraction will lead to pulling of the ribs in such a direction so that there will be lifting of the sternum up and out. So sternum will be lifted up and out. When sternum will be lifted up and out, it will ultimately lead to forward and outward movement of the whole thoracic or the chest cavity, and it will again increase the thoracic volume. So all these changes will lead to increase in thoracic volume. This is the second change. And change number third in the process of inspiration will be driven by abdominal muscles. You also have abdominal muscles. Now let us have a look what they will do. Abdominal muscles. What they will do? During these two changes, abdominal muscles will relax and will allow compression of different things. Here you will write down abdominal muscles will relax, and their relaxation will lead to, देखो जब abdominal muscles relax होंगे during these changes, and they will relax, they will lead to compression of abdominal organs by diaphragm. जो abdominal organs यानी विसरा होगा उसका compression होगा by the diaphragm. Compression of abdominal organs or viscera by diaphragm. This will be the next thing. And after compression of abdominal muscles, compression of these abdominal organs by the diaphragm, there will be a passive role for the whole process of inspiration. What I mean to say, जो abdominal muscles जैसे ही relax करेंगे तो जो abdominal organs होंगे they will be compressed by the diaphragm. As if they will be compressed by the diaphragm, they will indirectly lead to increase in the volume, but a little bit passively. So this is the passive role being played by the abdominal muscles to conduct the process of inspiration. And when their relaxation has led to increase in the lung volume, increase in the thoracic volume, when their contraction has led to the increase in the thoracic volume, when the muscles of the diaphragm, their contraction has led to the increase in the thoracic volume. तो इसका मतलब ये हुआ जो thoracic volume है, जो lung volume है, वो बहुत increase हुआ, और जैसे ही volume increase हुआ, उसके increase होने से जो lungs के अंदर pressure था, वो decrease हुआ. All these have led development of the negative pressure by -2 to -6 mm of the Hg. लंग प्रेशर्स के जो डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं उनके बारे में हम आगे जानेंगे. तो यहाँ पे आप ये याद रखोगे कि इन तब्दीलियों की वजह से जो लंग्स के अंदर प्रेशर ऑफ द एयर था वो डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ विद इन द लंग्स. एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेगेटिव प्रेशर बाय -2 to -6 will force the air to get incorporated, to get drifted towards the lungs. Because जो एयर होता है, जो गैसेस होते हैं, वो फ्लो ऑलवेज करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर दिस
प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इन तब्दीलियों की वजह से आपने लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया। जैसे ही आपने नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया तो इस नेगेटिव प्रेशर के डेवलप होने से जो एयर बाहर था, एटमॉस्फेयर में था, सराउंडिंग में था, वो ड्रिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड ऑफ द लंग्स, एंड दैट ड्रिफ्टिंग कैन बी डिपिक्टेड इन द डायग्राम एज here air will rush in. तो आप लोगों ने देखा जो डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर रिलैक्सेशन हुआ, डायफ्राम रिलैक्स, बट जो you have seen that diaphragm has contracted. It has contracted. When it has contracted, it has lead to, it is flattening, leading to increase in the volume, and the ribs have been lifted up and out, including these are here this side you can see the sternum and ribs. This is the vertebral column, and this one is the pleural membrane. Their contraction and their contraction. Its contraction and their contraction had lead to lifting of the cavity up and out, leading to increase in the volume, ultimately leading to rushing of the fresh air towards the lungs. So this whole process is called as inspiration, and the whole process of inspiration will involve this route. First, air will come through external nares, उसके बाद एयर कहाँ पहुँचेगा, फ्रेश एयर नेजल चैम्बर्स, ठीक है, नेजल चैम्बर्स के बाद एयर विल मूव टुवर्ड्स द इंटरनल नेरीज, from the internal nares the air will move towards the pharynx. Okay, from pharynx इनके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में जाना है. It will move towards the glottis. ठीक है, from the glottis the air will move to the larynx. From the larynx air will move to trachea. ठीक है, from the trachea the air will move of trachea there will be bronchi, then bronchioles, then bronchioles, and from the bronchioles your fresh air will move towards the alveolar ductus, and ultimately it will reach to alveolar sacs. So let us have a look. जब whole process of inspiration होती है तो जो movement of fresh air होता है it will start outside, then external nares, then nasal chambers, then internal nares, then pharynx, then glottis, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, and then alveolar ducts, ultimately alveolar sacs. So this includes the process of inflow of the air or inspiration. Now the process of breathing also involves the outflow of the foul air or expiration. So expiration is that process in breathing which involves the outflow of the foul air from within the body, from within the alveoli, from within the lungs towards outside. तो इस
आउटफ्लो एक्सपायरेटरी प्रोसेस में पहला जो रोल होता है दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ डायफ्राम। बिकॉज ऑफ डायफ्राम, देखो प्रोसेस ऑफ इनस्पायरेशन में डायफ्राम जो मसल्स थे, फ्रीनिक मसल्स थे, उन्होंने कंट्रैक्ट किया था, बट नाउ दे विल रिलैक्स। द कंसर्न्ड मसल्स ऑफ द डायफ्राम दे विल रिलैक्स। अब देखो, once the diaphragm muscles will relax, their relaxation will lead to decrease in the volume of thoracic cavity. Why? Because it will now attain its convex shape. Once the diaphragm was flat, when it was contracted, it has lead to increase in the thoracic volume. But now, once it will relax, once it has relaxed, it will be lifted up. Once it will be lifted up, it will now lead to compression of the abdominal these organs in such a way so that the volume of the thoracic cavity will now be decreased. देखो, जब डायफ्राम के अंदर जो मसल्स हैं उन्होंने रिलैक्स किया, उनके रिलैक्स होने से डायफ्राम विल बिकम कन्वेक्स। डायफ्राम बिकम्स कॉन्वेक्स, ठीक है। And because of attainment of the convexity of the diaphragm, it will lead to decrease in the thoracic volume. Decrease in volume of thoracic cavity. Okay. This was the first one. Now here there will be involvement of the second one. जैसा मैंने कहा कि जो रिब्स के इन बिटवीन में मसल्स होती हैं उनको इंटरकॉस्टल्स कहते हैं, बाहर वालों को कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, एंड जो इंटीरियर साइड में होती है उनको कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। तो यहां पे अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, नाउ दे विल प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल। जो इंटरनल इंटरकॉस्टल्स हैं दे विल कंट्रैक्ट, they will contract, and their contraction will lead to जो internal intercostals है, internal intercostals they will lead to pulling of the ribs towards the interior side। तो रिब्स को ये अंदर की ओर खींचेंगे। जैसे ही ये रिब्स को अंदर की ओर खींचेंगे तो रिब्स एसोसिएट है फ्रॉम द वन साइड टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम एंड फ्रॉम द अदर साइड टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द स्टर्नम। तो ये स्टर्नम और रिब्स को अंदर की ओर और नीचे की ओर खींचेगी। देयर कंट्रैक्शन विल लीड टू पुलिंग ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम इन एंड लोअर और डाउनवर्ड साइड, इनवर्ड as well as डाउनवर्ड साइड। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा था वो कम होगा, लंग वॉल्यूम विल डिक्रीज, लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस। नाउ नंबर थर्ड दैट इज abdominal muscles. What abdominal muscles will do? They will go against this, that is they will contract. अब abdominal muscles contract करेंगे and their contraction will do just opposite to this, that is compression of the organs which are present in the abdominal cavity or the viscera in such a way so that they will move towards the diaphragm, and they are moving towards the diaphragm in such a way leading to declination of the content of the thorax, like ribs, like the lungs, and ultimately leading to decrease in the volume of thoracic cavity. देखो, जो abdominal muscles होते हैं, these abdominal muscles are the internal oblique muscles, and externally they are mostly present. External and
oblique. Once they will contract, their contraction will ultimately lead to compression of viscera towards, viscera का compression होगा towards diaphragm, और जिसकी वजह से जो lung volume है वो decrease होगा. Lung volume decreases. Once the lung volume is decreased, once the positive pressure is attained within the lungs or within the thoracic cavity, उसकी वजह से जो वहाँ प्रेशर था एयर का, गैसेस का, वो इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू द प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर. सो जब यहाँ अब प्रेशर इंक्रीज हुआ, देखो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के मसल्स जो है उन्होंने रिलैक्स किया. जब डायफ्राम के मसल्स ने रिलैक्स किया तो उनके रिलैक्स होने की वजह से डायफ्राम की जो पोजीशन है वो कन्वेक्स ज़्यादा हुई. वो जब कन्वेक्स ज़्यादा हुई तो उसके साथ साथ जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स थे उन्होंने कंट्रैक्ट किया. जैसे ही उन्होंने कंट्रैक्ट किया, उन्होंने रिब्स को, जो भी रिब्स हैं उनको अंदर की ओर और इनवर्ड एंड डाउनवर्ड अपनी ओर खींचा, इंक्लूडिंग दिस स्टर्नम. इसको भी इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड अल्टीमेटली there was decrease in the volume of the lungs, or in other words increase in the pressure of the air present within the lungs, and ultimately it will lead to movement of the air, this foul air, from within the lungs towards the outside. Now air will be rushed out. So these red arrows will include the inspiration and this blue one will include the expiration. This is the downward and inward lifting of sternum as well as the ribs. So जो ये दोनों प्रोसेसेस है, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दोनों को जब इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, एंड यू गेट द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, और इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन योर लंग्स विद योर सराउंडिंग्स. तो जैसे ही अब ये एक्सपायरेशन हुआ तो एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द एल्वियोलर सैक्स to alveolar ducts, from the alveolar ducts to bronchioles, isn't it? From the bronchioles to bronchi, from the bronchi to trachea, from the trachea to larynx, from the larynx to glottis, from the glottis to pharynx, from the pharynx to internal nares, from the internal nares to nasal chambers, from the nasal chambers to external nares. So this will include the inspiration and this will include the process of expiration, and both these processes, when they are combined, then they form the whole process of breathing. Process of inspiration as well as expiration अगर कंपेयर किया जाएगा बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा. इफ वी विल कंपेयर the involvement of the different respiratory structures in the process of inspiration as well as expiration, तो जो मेल्स है उनके अंदर जो इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन के बाद फिर एक्सपायरेशन होता है. तो मेल्स के अंदर जो लेटरल मूवमेंट्स होते हैं, लेटरल मूवमेंट्स, उन लेटरल मूवमेंट्स की वजह से 25% प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग या इंस्पायरेशन होती है, ठीक है. और जो फीमेल्स होते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनके अंदर एब्डोमिनल स्ट्रेच की वजह से जो लेटरल मसल्स ही होते हैं, जो लेटरल मूवमेंट्स होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 75% ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस और इंस्पायरेशन. तो इसका मतलब ये हुआ जो मेल्स होते हैं, ठीक है, उन मेल्स के अंदर 75% ऑफ ब्रीदिंग जो होती है वो एब्डोमिनल होती है, और जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर अगेंस्ट होता है, ठीक है. इंक्लूड्स बोथ प्रोसेस इन इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन. तो इसका जो कॉमन नंबर होता है दैट इज फ्रॉम 12 to 18 times per minute. This is called the breathing rate. However, this breathing rate varies
विद एज, विद सेक्स। जो इन्फेंटस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जो फीटस जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके अंदर उससे भी कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स, उनके अंदर एवरेज जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। With this we have concluded our today's lecture. Hope you got through the process of the inspiration as well as expiration, and I also hope that you are liking my lectures well. And if you like my lectures, do press the like button and subscribe my channel to get notifications of all my coming new lectures. Thanks to all of you.